Well, a very good afternoon to one and all present in front of your screen. On behalf of the Kidney Warrior Foundation and Zydus, I take great pleasure to welcome each one of you to join us for this session. Well, this session is indeed probably a first-time discussion within the community, but however, if you have been on CKD or if you have been on dialysis or post-transplant, this word anemia is no new word to you. There are times that we felt that anemia is even more difficult than the whole process of dialysis. And today we are here to discuss just the same, living well with anemia on CKD is the topic we're going to be discussing. And we have two special people with us this afternoon. I take great pleasure to introduce our doctors to you. We have Dr. Manisha, the professor and head department of nephrology, Osmania University Medical College and Osmania General Hospital. She was the vice president of the Indian Society of Nephrology from the year 2019-2020 and the council member International Society of Nephrology from the year 2017 to 2021. It's such a pleasure to have you with us, Dr. Manisha, and for you to share your thoughts on this very, very important subject that is important on the journey of CKD. We also move on to our next doctor for this afternoon. We have with us Dr. P.P. Varma, the Chairman, Department of Nephrology, Primus Hospital, New Delhi, the former honorary surgeon to the President of India, the former President of the Indian Society of Nephrologists, and he is also going to share forum to talk on this subject. Well, the interesting thing is this particular forum will be moderated a lot with the patient community on real life case studies on people who've been on dialysis or post-transplant or on CKD facing issues on anemia. Members of the panel will be Sachin, who's a long-term dialysis patient and very well known to the community. Of course, our very own Karimjit, who's a caregiver and doing some phenomenal work in the north of India. We also have Madeline from the south of India, who's a transplanted patient. And we have Mr. Vijay, who's also on the journey of facing issues with anemia. So without further delay, this is us on the panel. This is me, Marianne, your moderator, a caregiver. And of course, I'm sure if you see my face, you know who I am. And the other members are from Zydus. And special thanks to Zydus for giving us this opportunity to create the awareness within the patient community. And Dr. Manisha, may I request you to please take over. Thank you. Dr. Manisha, you're mute. Can you remove your mute button and read? Yeah, so thank you so much. It's an honor to be here and congratulate the Kidney Warrior Foundation for this massive and the first time initiative what they've undertaken, and it's an honor to share the platform with Dr. P.P. Varma, who has been an icon in the field of nephrology. And my salutations to the patients who are present here and the entire Zydus team as well. Anything for the patient, we are all for it. And that's the whole purpose of our being there. So first I'll talk about the basics of anemia in chronic kidney disease. मैं English में भी बोलूंगी और हिंदी में भी बोलूंगी, if that's comfortable to all of you. अगर आप कुछ different चाहते हैं तो you can write in the chat box and I'm sure the organizers will take it forward. So I'm sharing my screen. Yeah, so I think you can see that, right? So what is anemia? Anemia का क्या मतलब है? So it's quite easy to understand that there is a decrease in the red blood cells in the body, which is called anemia. The number of the red blood cells goes down and the hemoglobin inside the red blood cells also goes down as well. So anemia का मतलब खून की कमी, सीधी भाषा में, and hemoglobin less than 13 generally in men and less than 12 in women. इतना याद रख लीजिए, 13 से कम अगर खून है मेल्स में और लेडीज में अगर less than 12 है तो उसको एनीमिया कहते हैं. ये this differs with the age groups. With different age groups, the cutoffs of anemia are different. जैसे आप देख सकते हो, you can see in the slide there. But roughly, if you don't want to remember all this, just remember
less than 12, less than 13, or overall less than 12 is what is called anemia, and generally it applies to most of the CKD patients. So generally, agar blood 12 se kam hai, so you are anemic. What are the causes of anemia? Causes of anemia can be many. One thing is, and logically you can make out all of them. Even patients can understand that if there is bleeding somewhere, if there is bleeding outside the body, sometimes bleeding may be there inside the body, that causes anemia. So first thing is loss of blood somewhere, that causes anemia. The second important thing is because of some reactions, there may be destruction of the blood inside the body, autoimmune hemolytic anemia. In some of the diseases like SLE or drug-induced hemolysis, you can have destruction of the blood cells. So blood is formed, but it's destroyed. Then the third important thing is decreased production. Blood is not formed in the body. Very little blood is formed in the body. And blood is formed where in the body? It's formed in the bone marrow. So sometimes because of bone marrow diseases, the blood is not formed, you have anemia. And in kidney patients, what happens is bone marrow is normal, but there is still less production of blood from the bone marrow. And why is this? Because of deficiency of erythropoietin. Like diabetic patients, we have deficiency of insulin. वो हम सबको मालूम है, all of us know. Similarly, in kidney patients, there is deficiency of this hormone called erythropoietin. What is this erythropoietin? It is a hormone which is produced by the kidneys, and it acts on the bone marrow and helps in production of RBC. So it's very important because patients frequently ask, what is the connection between anemia and kidney? How is the kidney involved? Kidney forms urine, kidney removes extra water. But now you are telling that because of kidney problems, you have anemia. So this is the link, the connection between the kidney and the bone marrow, that the hormone erythropoietin, which is the main blood forming hormone, is formed in the kidney. So that's important. Then say there may be other causes. Cancer patients may have anemia, or many other chronic disease patients can have anemia. So these causes you should remember. Do not think that every anemia is because of poor nutrition, poor food intake. There are so many causes as well. So though in our country, poor food intake and less iron, less B12 in the diet, and kidney patients, sometimes they have poor appetite, they don't eat well. So that is also one of the predominant causes of anemia. So this slide only shows that anemia, there can be many causes, and proper evaluation is important. Suppose there is deficiency of iron and you are treating deficiency of B complex, you are taking B complex. Is it going to help? It's not going to help. If there is a bleeding going on inside your body and you are just taking more and more iron injections and all that, is it going to help? No. So it's always important whenever you have anemia. Most of the times you may be right that maybe because of some iron deficiency or maybe nutritional deficiency, but it's always better to consult your nephrologist who's looking after you to find out what exactly is the cause of anemia. So ये स्लाइड में क्या बता रहे हैं? एनीमिया के कॉजेस, अलग अलग कॉजेस हैं. खून की कमी के, खाने में कोई डेफिशिएंसी है, विटामिन की डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसी है, या कहीं ब्लीडिंग हो रही है, या कोई ड्रग रिएक्शन हो गया है. और किडनी पेशेंट्स में एनीमिया काफी कॉमन है क्योंकि किडनी पेशेंट्स में हार्मोन नहीं बनता है. हार्मोन कौन बनाता है? किडनीज बनाती है. और हार्मोन का क्या नाम है? एरिथ्रोपोइटिन. जैसे डायबिटिक पेशेंट्स इंसुलिन के बारे में परेशान रहते हैं, वैसे किडनी पेशेंट्स एरिथ्रोपोइटिन की डेफिशिएंसी होती है किडनी पेशेंट्स में, और एरिथ्रोपोइटिन किडनी से निकलता है और बोन मैरो में एक्ट करता है जिससे आरबीसी बनते हैं. सो याद रखिए कि एनीमिया के एक नहीं, सो मेनी रीजंस आर देयर, इतने सारे कारण हैं. सो अगर ट्रीटमेंट बराबर लेना है तो कारण समझना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एनीमिया? सो if we all know that we go to the lab, we get the test done, hemoglobin is low, and then we are diagnosed with anemia. And most of the times we look at the eyes and pale tongue, we call anemia. But remember, these are the symptoms we all know. ये सब हमको मालूम है कि hemoglobin कम होएगा या फिर pale दिखेंगे. But anemia से और symptoms भी हो सकते हैं. There may be many other symptoms. Feeling tired, या कुछ एनर्जी नहीं है डेली एक्टिविटीज के लिए, हैविंग नो एनर्जी, पुअर एपेटाइट, भूख नहीं लगना, नींद नहीं आना बराबर, लाइक ट्रबल स्लीपिंग, चक्कर आना, नहीं तो ठीक से समझ में नहीं आना, वीकनेस, तबियत ठीक नहीं है, जनरल इल हेल्थ, दे मे बी ऑल सिम्टम्स एज वेल एज साइंस ऑफ एनीमिया. या दिल का धड़कन तेज चलना, हाई हार्ट रेट, जनरली अपना हार्ट रेट 60 to 100 के बीच में रहता है. 60 to 100 इज आवर नॉर्मल हार्ट रेट. मोर देन दैट इज it may be a symptom of anemia. Then feeling depressed or dum chadna, short of breath, or pale dikhna. So
you can understand, I think all the patients understand, all the patients who have chronic kidney disease, all the patients who go on dialysis, anemia is very, very important. And many of them suffer from anemia, but do not realize it because they attribute it to so many other things. They think it's a heart problem. The simple reason for the breathlessness may be anemia. So ये याद रखिए कि anemia के बहुत सारे लक्षण होते हैं, symptoms होते हैं, और जनरली अगर तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो याद रखिए ये एनीमिया के लक्षण भी हो सकते हैं. दम चढ़ना भी एनीमिया का लक्षण हो सकता है. हार्ट बीट तेज होना भी एनीमिया का लक्षण हो सकता है. क्यों होता है एनीमिया किडनी डिजीजेस में? तो इसका आंसर मैंने आपको पार्टली समझाया है. आई हैव आंसर्ड दिस पार्टली. व्हाई एनीमिया इन किडनी डिजीज? It's because of so many factors: poor nutrition, iron deficiency, folic acid deficiency, vitamin B12 deficiency. So these are the deficiencies where we are not eating properly, because of which we have vitamin deficiency, iron deficiency, etc. Iron is important and we should take this iron seriously. Many of the patients, they do not get the iron tests done. So iron levels should be done. It's important. At least once in 3 months, you should get your iron levels checked. Blood iron level and saturation, both are important. Generally, what happens in our state, at least, patients are under Arogya Shri. Dialysis is going on under Arogya Shri, but iron profile generally is not available under the scheme. So the patients neglect getting it and they keep on taking IV iron injections on dialysis. Many of the patients may be doing it. So they keep on taking iron, and when we ask them whether they have gotten iron profile done, they said it's not needed. Anyhow, doctor, we are taking injections regularly. Remember, excess of anything is bad. Excess of a good thing also is bad. And you may have iron toxicity as well. Sometimes it may lead to liver problems. So iron is very good, but you should check. You should check the levels as per the guidelines once in 3 months. And your doctor is going to tell you whether you need the injections or you do not need the injections. So take iron seriously. Deficiency as well as excess is bad. Many of the people in our country, they suffer from deficiency, which is much more common. But remember, when your doctor is telling you to get the test done, please get it done. It's not for any other reason, it's for your health. So यही चीज मैं बताना चाह रही हूँ कि आयरन के लेवल्स बीच बीच में कराना जरूरी है. 3 महीने में एक बार करा लीजिए, क्योंकि आप अगर आयरन ले भी रहे हैं, आयरन इंजेक्शंस ले भी रहे हैं डायलिसिस पे, तो उसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ अच्छा है, क्योंकि आयरन ज्यादा भी हो सकता है बॉडी में. अगर आयरन ज्यादा हो गया, वो चीज भी अच्छी नहीं है. सो आयरन का कम होना या ज्यादा होना दोनों भी बुरा है. इसलिए एज पर द गाइडलाइंस 3 महीने में एक बार आयरन टेस्टिंग करानी चाहिए, और उसके हिसाब से यू शुड टेक आयरन. सो यू शुड टेक आयरन अकॉर्डिंगली. The other thing I already told you, so apart from the deficiencies of iron and nutrition deficiencies, erythropoietin, ये याद रखिए, blood injection जिसको बोलते हैं. Many of the patients call it blood injection. It is nothing but erythropoietin injection. Some patients keep on asking, madam, we are already taking iron injections. We are taking injections, blood injections. Which injection? Iron injection. So why are you again writing erythropoietin injection? Remember, both are important. Iron, if you take iron injections, that iron, how will it convert into blood? With the help of erythropoietin. So erythropoietin is the hormone which converts whatever iron you are taking and helps in formation of blood. So this should be important. This should be understood. This important point by everyone. When your doctor is telling you to take iron injection and erythropoietin injection, after the reports, he is telling you with this meaning that both are important. You keep on taking iron without taking erythropoietin, what will happen is you will have iron accumulation in the body and it will not be converted to the blood. So both are important. Okay. So what happens when the kidney is functioning normally? As you can see on the left side, healthy kidney produces good amount of erythropoietin. Erythropoietin acts on the bone marrow, which is present in the bones, and it helps in the formation of RBC, red blood cells, which circulate everywhere and carry oxygen to all parts of the body. Whereas in patients of kidney failure, what happens is kidney fails to produce erythropoietin. As a result, there is less production of blood from the bone marrow, and as a result, there is decrease in the oxygen carrying capacity of the blood. We all know that blood, when we are talking about blood, we are talking about the hemoglobin. And why is hemoglobin important? Because the oxygen, the good gas, the oxygen is carried to all parts of the body, tied to the hemoglobin. That's why hemoglobin is important. And what this causes, so in kidney disease, whenever there is decrease in erythropoietin and there is decrease in red blood cell production, what happens is the body fails to receive sufficient amount of oxygen. And as a result,
the heart gets stimulated to pump more and more to try to send oxygen to all parts of the body. And as a result, sometimes heart failure can occur if the patient is suffering from anemia. So anemia एक छोटी सी चीज है, बहुत छोटी चीज, मामूली सी चीज लगती है, बट ये याद रखिए कि एनीमिया के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हैं. सो एनीमिया होने से ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. अच्छा, अब अपन ने बात की है आयरन डेफिशिएंसी, वी हैव टॉक्ड अबाउट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, वी हैव टॉक्ड अबाउट, एंड वी आल्सो टॉक्ड अबाउट एरिथ्रोपोइटिन डेफिशिएंसी. But remember that there is certain important reason in kidney patients. That extra reason, what is that? That is high hepcidin level. So I'm not expecting you to remember all that, but what does that mean? That there are some bad impurities in the blood of the kidney patient, and they lead to inflammation, and this causes anemia. So some patients may have normal iron, normal erythropoietin, everything may be okay, but still they are having anemia, and this is because of these bad toxins. So we measure creatinine, we know that it's a bad molecule, but there are many other poisonous substances which we do not measure, and these may cause further impairment of erythropoiesis. So one such bad substance is hepcidin. High hepcidin level also leads to anemia. And how do we correct this hepcidin level? I'm sure Dr. Varma would be talking to us about that. So what have you understood till now? That anemia management, you have to take good nutrition, good vitamin B12, folic acid, iron in proper quantities. Your erythropoietin dose should be okay, and something more. And that something more Dr. Varma is going to tell you today. So how do you remove the bad things from your body? By dialysis. This we all know. What extra we can do to reduce the level of hepcidin, that Dr. Varma is going to tell you. I'll keep it a secret and let Dr. Varma reveal that secret. Okay. So you have to wait for that. Fine. So you must be seeing why today Zydus and the Kidney Warrior Foundation is talking about anemia. Is it common? It is very common. Just look at the chart there, stage 5. That is, dialysis patients are in stage 5. And 80% of them have anemia. Even in the early stage of kidney disease, stage 1, 2, 3, you see anemia is there. It's very common, especially in Indian population, and we all should know about anemia. We keep on worrying about the number of dialysis, frequency of dialysis, creatinine level, but we forget about the poor anemia. Remember, many of the symptoms of kidney patients may be because of anemia. They may be, as I said, breathless, not sleeping well. That may be because of anemia, because it's so very common. So what are the other effects of anemia? So as I said, if there is anemia, the oxygen does not go to the different organs of the body. And there is increased pressure on the heart. There is increased working of the heart. And as a result, it leads to heart failure, which is a serious thing. They may be in poor quality of life. We are not able to do anything. We go to dialysis, come back, sit at home, wait for 2 days, then go for dialysis and come back. Do you want this sort of a life? We are going on dialysis to be normal. Fine, God has given this disease, you are on dialysis, but it should not be the end of life. You should learn to live well with dialysis, and that will only happen if you take care of small things. For example, keep your hemoglobin around 11 or 12 and you'll feel much better. No fatigue, you'll be able to exercise, and you will not lose your memory and all those things. So anemia causes all these problems, and sadly, we do not ever talk about it. And I'm so happy that Kidney Warrior Foundation has taken up this initiative. So it causes changes in the heart as well. So remember, many of the patients of kidney disease, they have anemia, and anemia causes cardiac disease, heart disease. And many of the patients of anemia, because of kidney disease, they die because of cardiac problems. So remember that anemia is a major contributor to the cardiac problems, which may kill the patient. So patients do not die because of dialysis. They may die because of heart disease many of the times, and anemia is a major culprit there. So ये याद रखना चाहिए कि किडनी के पेशेंट्स डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है. अगर आप अपनी लाइफ अपने हाथ में लोगे, बराबर डायलिसिस कराओगे और साथ में ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखोगे, फॉर एग्जांपल एनीमिया मैनेजमेंट, आपका आयरन लेवल अच्छा है, हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा है, you will be free from many problems. So as I already told you, it's important for maintaining your cardiac health. Okay, what are the tests for anemia? We all know, madam, hemoglobin करा लिया, ठीक था, hemoglobin ये था. So is that the only test? No, remember there are other tests as well. Hemoglobin, you should get it done. CBP, complete blood count, where we look at the red blood cells, white blood cells, platelets, all those things are checked for. Reticulocyte count, iron parameters. This is what I wanted to emphasize. Don't argue with your nephrologist. Why are you getting it done? It is important, because if you're having high levels of iron in the body and you are keeping on taking iron injections, that's not a wise thing to do. That's foolish. So iron levels should be done. Vitamin B12, folic acid levels, if the nephrologist feels, they'll get this done as well.
and sometimes to check whether any bleeding is going on inside. Stool for occult blood is done. So these are all the tests for anemia. Many times patients argue, madam, I'm a kidney patient. Why are you asking for a stool examination? So there is a reason for everything. So anemia kabhi bhi hai, to doctor se baat kar lijiye ki kya karan ho sakta hai, and they will write the appropriate tests. So jaisa what I was telling you, that because anemia can have so many causes, so only increasing iron erythropoietin may not be the answer. You have to find out what is the cause and then treat it. If everything is okay, then we think of something else. So these are the iron tests. Don't worry about these reports. This is only to say, be familiar that doctor might ask for an iron profile, ferritin level. Okay, don't get confused. He's trying to look at your iron stores in the body. How often should you get it checked? So if you're normal, or if you're not on dialysis, once in a year, twice in a year is fine. But dialysis patients, we tend to do it more frequently, at least once in 3 months if the patient is doing fine. If we are changing the dose of erythropoietin and all, we do it once in a month as well. So in a nutshell, that's the concluding slide. How do we treat anemia? We check the cause. Always find out what is the cause of anemia. और वो कब पता चलेगा जब आप hemoglobin कराओगे. Get the hemoglobin done regularly. Don't think I'm taking iron, I'm taking erythropoietin, I'm fine. There's no need to do the blood test. And if there is a vitamin deficiency, should be corrected. Nutrition should be proper. Or this is very important. Nutrition is very important because dialysis patients, once they go on dialysis, they stop everything. Protein band, sabzi band, fruits band, green vegetables band. This is a wrong concept. See, proper nutrition, eating properly is important, not stopping everything. Because पास वाले ने बोला ये बंद कर दो, सामने वाले ने बोला ये बंद कर दो, सब कुछ बंद. That's not correct. Some things have to be avoided. Otherwise, egg white can be taken. You can take green vegetables. You can, potassium is a problem, but the green vegetables can be put in water, and then the water can be drained off, because this is important for correction of anemia as well. Because you are, otherwise, if you are not taking the diet properly, iron goes off from your diet, protein goes off from your diet. The good protein also goes off. That's not correct. Then iron injections and tablets, according to the report, erythropoietin as per the doctor's prescription. And Dr. Varma, I hand it over to Dr. Varma because he'll tell us about the new medicines. So he'll tell us, what new has come. We are all aware, iron tablets, injections, what to take, your doctor will tell you. Erythropoietin, so many are available in the market. How much, when, how to take, your doctor is going to tell you. Take the guidance and then you can do it on your own. And thank you. I think that was the concluding slide. Over to you, Dr. Varma, for your presentation. And thank you for the opportunity again. Thank you, Dr. Manisha. We'll have Dr. Varma take over, and we have a slides check, please. Thank you very much. I just want to check, are the slides visible? No. Not yet, Doc. Can we share screen? I shared the screen, then I will, yeah, are they visible? Not visible. It's visible, Doc, now. It's visible? Okay, yes. Great, great. Thank you very much, Kidney Warriors, and thank you very much, Professor Manisha. It's always pleasure listening to Professor Manisha. She's an excellent teacher, and I think she has mesmerized the audience with what is anemia, kitni degree hai anemia ki, how severe is anemia, what should be done, क्या टेस्ट करने होते हैं, कितने फ्रीक्वेंटली करने होते हैं, और कितना एरिथ्रोपोइटिन देना चाहिए, ये सब डॉक्टर प्रोफेसर मनीषा ने आपको बताया. अब हम आते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर कि क्या ट्रीटमेंट दी जाए. आर द स्लाइड विजिबल? इज इट मूविंग? फाइन. हमारा गोल क्या है? बीच में प्रोफेसर मनीषा ने बताया हमारा गोल है कि हीमोग्लोबिन 11 से 12 ग्राम के बीच में होना चाहिए और हमें कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. Few years back, when the erythropoietin was not there, blood transfusion was a routine practice in all dialysis units. Every patient used to carry blood with them, and every... Can you keep it quiet because there's a background noise? So now gradually what has happened, how to treat anemia? The question is that. And erythropoietin, as has been mentioned, came somewhere in 1986.
That is a long time, approximately 37, 38 years back. And this is in vogue for last 30 years plus now. In India, I remember first time erythropoietin came around 1993. तो लगभग 30 साल हो गए हैं erythropoietin लगाते लोगों को. और दूसरा चीज which has been emphasized again is the iron requirement. Now, iron can be taken as a pill, as a tablet, or it can be given by intravenous or by blood injection. So remember, ESA, erythropoiesis stimulating agent, yani ki erythropoietin, is given to patients for increasing hemoglobin. You can give it under the skin, that is subcutaneous, or IV, or in the vein. Subcutaneous is better क्योंकि इसमें 30% better efficiency है, तो dose requirement कम हो जाती है. और दूसरा, ensure that adequate iron supply is there with the patient by oral or by IV route. Now, this is the erythropoietin we have been talking about, which revolutionized the anemia management around the world. Now, जब पहले ब्लड दिया करते थे तब प्रॉब्लम होती थी ब्लड बॉर्न इन्फेक्शंस की, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस की, या आयरन ओवरलोड की, जो प्रॉब्लम सारी एरिथ्रोपोइटिन के आने से खत्म हो गई. ये एरिथ्रोपोइटिन क्या है? नॉर्मली हमारी किडनीज ही एरिथ्रोपोइटिन बनाती हैं. वो ब्लड के माध्यम से बोन मैरो में जाता है और बोन मैरो से ब्लड बनता है. So that means erythropoietin is a hormone which is produced by kidneys. From kidneys, it goes to the bones, which is a blood forming factory, and it stimulates the blood formation. दूसरी चीज आयरन की बताई. आयरन की कई टैबलेट हैं, कई टैबलेट, किसी बहुत तरह की प्रिपरेशन है, फेरस सल्फेट, फ्यूमरेट, ग्लूकोनेट, कई चीजें हैं. और अभी आयरन की टैबलेट्स आ गई हैं. आयरन बहुत ओरल टैबलेट्स हैं, लाइपोसोमल टैबलेट भी हैं, और दूसरी इंट्रावेनस प्रिपरेशंस हैं जो आयरन सुक्रोज या आयरन कार्बोक्सी माल्टोज. जो टैबलेट ओरल खाते हैं, व्हाट इज द बेनिफिट? द बेनिफिट इज you find it is cost effective, very cheap. If you really want to know the cost of a tablet of iron, it is 3.5 paisa. Just 5.5 paisa is the cost of tablet. Very cost effective. It avoids the need for venous excess, and it eliminates all the potential infusion reactions. बहुत अच्छा है ओरल खाना, लेकिन ध्यान रहे डिसएडवांटेज क्या है. पहली चीज कि एब्जॉर्प्शन बहुत लिमिटेड है. वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन इज एब्जॉर्ब, क्योंकि किडनी पेशेंट कई दवाइयां ले रहे होते हैं, फॉस्फेट बाइंडर ले रहे हैं, एंटासिड ले रहे हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन कम है. और दूसरा, लोग खाते नहीं टैबलेट, क्योंकि खाने से कईयों को पेट में एसिडिटी वगैरह हो जाती है. जीआई इंटॉलरेंस इज वेरी कॉमन, इसकी वजह से लोग खाते ही नहीं टैबलेट. So iron deficiency is a very, very common problem in dialysis unit or in CKD patients. Now, what is the advantage of injectable iron? Benefit is, number one, कि आपने इंजेक्शन लगाया, आयरन तो बॉडी में चला ही गया. Wonderful. Number two, if the iron is there in the body, अब erythropoietin की requirement कम हो जाएगी. तो ESA डोज भी कम हो गई, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी ना देना पड़ा, कॉस्ट भी कम हो गई. सो आईवी इंजेक्शन के क्या फायदे हैं? इट इज बेटर देन ओरल. इट एंश्योर्स ओरल दैट आयरन हैज गॉन इन. इट रिड्यूसेस erythropoietin intake and the cost. It lowers the need for blood transfusion. But there are some problems. Number one, it can result in reaction. Though the present day iron preparations are very safe, iron carboxy maltose वगैरह कंपनीज कोट करती हैं रिएक्शन 1 in 45,000 इंजेक्शंस में, बहुत कम, लेकिन फिर भी इन रिएक्शन तो है ही.
सेकेंडली, इट इज कॉस्टली. आप अगर 1 ग्राम आयरन लगाओगे, लगभग 3,000 rupees it will cost you. And one important thing which Dr. Manisha was emphasizing, कि अगर बॉडी में कोई इंफेक्शन पड़ी हुई है, जो बहुत कॉमन है डायलिसिस पेशेंट में, किसी को कैथेटर की इंफेक्शन है, किसी को टीबी है, किसी को और इंफेक्शन है, तो ऐसे इंफेक्शन के पड़े हुए आयरन देना खतरनाक हो सकता है, बिकॉज बैक्टीरिया को सबसे अच्छा आयरन लगता है खाने में. So if you are giving iron to a infected patient, the infection can spread. So अगर आप देखें पेशेंट को, तो 3 चीजें हैं. नंबर 1, आयरन या विटामिन्स अच्छी तरह पेशेंट में होने चाहिए, तभी खून बनेगा. नंबर 2, एरिथ्रोपोइटिन आपको देना है. और कई बार देखोगे आप कि एरिथ्रोपोइटिन से पेशेंट को फायदा नहीं हो रहा. तो क्या कारण है? इफ रिस्पॉन्स इज पुअर, लुक फॉर अवेलेबल आयरन. कई बार क्या होता है, आयरन तो बॉडी में बहुत है, लेकिन वो आयरन पड़ा हुआ है, लेकिन उसको यूटिलाइज या मोबिलाइज नहीं हो रहा. लेकिन चेक करो पेशेंट को डायलिसिस ठीक मिल रहा है. अगर डायलिसिस इनएडिक्वेट है, तब भी रिस्पॉन्स पुअर होता है. चेक फॉर एनी ब्लड लॉस. बहुत कॉमन है पेट में ऐसे कोई, किसी को अल्सर हो या किसी को कोई भी इरोजन्स हो, उसकी वजह से अगर ब्लड लॉस हो रहा है. एंड फाइनली, अगर कोई इंफेक्शन या इन्फ्लेमेशन है, तो रिस्पॉन्स एरिथ्रोपोइटिन का पुअर रहेगा. तो बेनिफिट क्या है एरिथ्रोपोइटिन के? सबसे बड़ा बेनिफिट, इट विल करेक्ट एनीमिया. जिस चीज के लिए एरिथ्रोपोइटिन दिया जाता है, उससे क्या फायदा? डॉक्टर मनीषा ने भी फायदे बताए हैं. It will eliminate the need for repeated blood transfusion. Number 3, it will improve the quality of life. It will increase the exercise tolerance. Shakti patient में है, जान है, he can do exercise. It will increase the appetite. It will improve the libido. Sexual power जो है, जो डायलिसिस पेशेंट या CKD एडवांस पेशेंट हैं, उनमें सेक्सुअल पावर्स कम हो जाती हैं, तो ये इंप्रूव करेगा लिबिडो. इट विल इंप्रूव द कार्डिक फंक्शन. आपका सांस फूलना, ब्रेथलेसनेस, एंजाइना कम हो जाएगा, एंड हॉस्पिटलाइजेशन भी कम हो जाएगी. सो दीज आर द एडवांटेज. अब कितना में एरिथ्रोपोइटिन जरूरत पड़ेगा, ये अलग बात है, डॉक्टर पे छोड़ दो. वो निर्भर करता है, दैट विल डिपेंड ऑन व्हाट इज योर बेसलाइन हीमोग्लोबिन, how are you responding to erythropoietin, which particular type of erythropoietin you are taking, whether you are taking under the skin or in the vein. So there are different variables. Short acting ले रहे हो, long acting ले रहे हो. So dose of erythropoietin will depend on many factors. You leave it to doctor, leave it to nephrologist to decide, but you should know that erythropoietin is practically mandatory in 95% of patients on dialysis, and otherwise also, if you find, depending on stage, many people require erythropoietin. Now, at disadvantage क्या है? ये तो सारे एडवांटेज पढ़े हमने. अब नुकसान क्या है डिप्स का? 1, एक तो है कि छोटे मोटे लोकल रिएक्शन है, जहां पे इंजेक्शन लगा, पेन हो गया, थोड़ा नॉजिया हो गया, फीवरिश फीलिंग आ गई, डिजीनेस किसी को हो गई, या लोकल स्वेलिंग आ गई. ये तो छोटे छोटे हैं, ज्यादा परवाह नहीं करते. बट कीप इन माइंड, एरिथ्रोपोइटिन ज्यादा बढ़ने से, ज्यादा देते जाओगे आप, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपकी फिस्टुला ब्लॉक हो सकती है, किसी को स्ट्रोक या हार्ट अटैक हो सकता है. तो दीज थिंग यू शुड कीप इन माइंड, कि जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, ऐसा नहीं आप जितना मर्जी लेते जाइए एरिथ्रोपोइटिन. लीव इट टू डॉक्टर, कितनी डोज आपको मिलनी चाहिए. अगर आप अपनी डोज से ज्यादा जाएंगे तो ये नुकसान हो जाएंगे. और लिमिटेशंस क्या है एरिथ्रोपोइटिन की? एक तो बार बार इंजेक्शन देना पड़ता है, पेनफुल भी है, कोई भी इंजेक्शन पेनफुल है. जैसे मैंने बताया, इट कैन गिव राइज टू राइज ऑफ ब्लड प्रेशर. Higher doses can increase cardiovascular risk, whether it's a heart attack, whether it's a stroke.
and repeated injections result in non-compliance. A lot of people, one of the studies found कि 27% लोग लेते ही नहीं, जिनके पास है भी, अगर फ्री पड़ा भी है। तो ये नुकसान है एरिथ्रोपोइटिन के। ना दूसरी चीज है एरिथ्रोपोइटिन रेजिस्टेंस। कई बार आप एरिथ्रोपोइटिन देते भी रहो पेशेंट को, डोज भी बढ़ाते रहो, लेकिन उसका फायदा नहीं होता। नॉर्मली हम कहते हैं कि भाई कम से कम 1 ग्राम हीमोग्लोबिन महीने में बढ़ जाना चाहिए, बट मेनी टाइम्स यू फाइंड पेशेंट का आयरन भी ठीक है, पेशेंट के विटामिन भी ठीक है, वो खा पी भी रहा है, ही इज टेकिंग एरिथ्रोपोइटिन ऑल्सो, बट ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। बीच में एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज बताई गई थी आपको, हेप्सिडीन। हेप्सिडीन एक मार्कर है, अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन है तो ये हेप्सिडीन अगर बॉडी में ज्यादा हो जाए तो ये रिस्पॉन्स नहीं होने देता। सो कॉमनेस्ट कॉज इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन है जब एरिथ्रोपोइटिन काम नहीं करती। इसके अलावा बहुत चीजें हैं, विटामिन डी डेफिशिएंसी, हेमोलिसिस, मैल न्यूट्रिशन, डायलिसिस, डोज कम वगैरह वगैरह। बट रिमेंबर, अगर 300 यूनिट सबक्यूटेनियस या 450 यूनिट आईवी पर वीक दे रहे हैं, 450 यूनिट का मतलब अगर 60 किलो का आदमी है, अगर एक हफ्ते में उसे आप 25,000 यूनिट दे रहे हैं, 60 किलो के आदमी को 25,000 यूनिट से भी अगर उसका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा या फिर भी कम हो रहा है हीमोग्लोबिन, दैट मीन्स उसे एरिथ्रोपोइटिन रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस है, that is bad. You must consult the doctor because there is bound to be some infection or inflammation जिसका मार्कर हेप्सिडीन है कि आपका हेप्सिडीन बढ़ा तो नहीं हुआ। तो अगर ये देखें लिमिटेशंस, तो हमने बात अभी कर ली, तो हाइपो रिस्पॉन्सिवनेस काफी हो जाती है अगर पेशेंट को कोई चीजों की कमी हो। अब आते हैं क्या ऑप्शन नई आई है, जो प्रोफेसर मनीषा कह रही थी, सस्पेंस। शी वाज वेरी कैंडिड नॉट टू डिस्क्लोज व्हाट वी आर टॉकिंग, बट शी नोज व्हाट वी आर टॉकिंग टुडे। दिस इज कॉल्ड हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर इनहिबिटर्स। जैसे आप हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हैं, आपने देखा होगा वहां पे हवा में ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिसको हाइपोक्सिया कहते हैं। अब हाइपोक्सिया में देखते हो कि कश्मीरी लोग जाओ या लेह में जाओ, उनके गाल लाल लाल होते हैं क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है। तो ये हाइपोक्सिया की वजह से हमारी बॉडी में एरिथ्रोपोइटिन ज्यादा बनता है, और ये हाइपोक्सिया का जो फैक्टर होता है वो धीरे से मर जाता है थोड़ी देर में। तो ये दवाई बेसिकली हाइपोक्सिया के फैक्टर को मरने नहीं देती, तो हाइपोक्सिया स्टिमुलेट करता रहता है और हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन नई बनती रहती है। तो ये हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर की जो एरिथ्रोपोइटिन एक हिंदुस्तान में आई है, काफी टाइम से दुनिया में रिसर्च चल रही थी कि भाई ये इंजेक्शन वाली चीजें हैं, ओरल टैबलेट क्यों ना बना दी जाए। तो ये टैबलेट बन के आई। मुझे याद है कि लगभग 3 साल 3.5 साल पहले मैं चाइना में था, गया हुआ था, तो वहां पे उन्होंने ये ओरल टैबलेट 2019 अक्टूबर में शुरू कर दी थी, यानी कि 2.5-3 साल पहले। तो अभी यहाँ पे जाइडस कंपनी ने डेसिडुस्टैट करके ये टैबलेट इसी साल फरवरी मार्च में शुरू की है। ना इसके एडवांटेजेस क्या है, ओरल टैबलेट खाने के क्या एडवांटेजेस हैं? नंबर 1, ये एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन बॉडी के अंदर बढ़ाता है, कि ऐसा नहीं जब आपको इंजेक्शन देना पड़ेगा ना, ये टैबलेट ही जो है आपकी बॉडी में जो हाइपोक्सिया के वजह से जो बन रहा है प्रोटीन, उसी को बढ़ाता है। तो इंडिजिनस एरिथ्रोपोइटिन है। इसकी एफिशिएंसी, कई ट्रायल्स हुए हैं सेफ्टी के लिए भी, इसकी एफिकेसी के लिए भी, और ये देखा गया है दैट बोथ द कन्वेंशनल एरिथ्रोपोइटिन जो अभी तक इंजेक्शन चल रहे थे एंड दिस टैबलेट आर इक्वली गुड। तो एक बहुत बड़ा फायदा है दैट दिस इज इफेक्टिव
even in setting of infection or inflammation. तो ये बहुत बड़ा फायदा है, जिसको पहले हाइपो रिस्पॉन्सिव पेशेंट, हर डायलिसिस सेंटर में 15-20% ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको जो मर्जी करते रहो, जितनी मर्जी डोज एरिथ्रोपोइटिन के बढ़ा दो, वो ठीक नहीं होते. सो इससे वो भी ठीक होते हैं. तो देखा गया है कि जो हाइपो रिस्पॉन्सिव पेशेंट है वो 60-70% पेशेंट इससे फायदा हो जाता है. मैंने बताया था कि अगर आयरन बॉडी में कई बार होता है, बहुत आयरन पड़ा हुआ है लेकिन आयरन मोबिलाइज या यूटिलाइज नहीं हो रहा, तो ये आयरन को यूटिलाइज करवाता है. तो देखो, आयरन का भी फायदा कर रहा है, रिस्पॉन्स भी अच्छा दे रहा है, ओरल भी ले रहे हैं, एंड रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन. जो हेप्सिडीन की बात कर रहे थे उसको भी दबा देता है. सो हर चीज का फायदा हो गया. एक तो ओरल चली गई, you are taking it oral, no injection, no pain, no reaction. Number 2, even in hypo-responsive patient, it is acting. It is improving, mobilizing the iron also, and it is effective in setting of inflammation also. तो ये CKD progression के लिए, iron utilization के लिए, bone disease के लिए, तो हर जगह से ये जो बीच में आप स्लाइड में देख रहे हैं हेप्सिडीन वगैरह, इन सब को दबाता है. सो इट इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल मेडिसिन विच हैज कम. और अगर आप देखें, ये है जो जाइडस कंपनी को, देयर इज ओनली वन कंपनी एट प्रेजेंट इन इंडिया विच इज प्रोड्यूसिंग दिस. ये ओरल एरिथ्रोपोइटिन आ गई है, एंड वी कैन से ऑन दिस फ्रीडम डे that let's get freedom from injections of erythropoietin. तो ये मैं जरूर बताऊं कि मेरे कई पेशेंट्स, thank you so much, I'll stop here, now we will go for questions, लेकिन I don't know if my patients are here. अब कुछ पेशेंट्स मेरे जो हैं वो एरिथ्रोपोइट ये ले रहे हैं, उनका क्या रिएक्शन है, उनको कैसा फील कर रहे हैं, मैं उनसे, अगर उन लिंक उनके पास है तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा. क्या रीना ठाकुर जी हैं क्या? ये मुझे पहले. यस सर, यस सर. अच्छा, आप कब से ऑक्सीमिया ले रहे हैं ये टैबलेट? सर ऑक्सीमिया मदर लास्ट. Manoj ji, 1 minute. Doc, can we request the patients to open up their cameras so that we could have a human interaction? Yeah. Ma'am, I'm sorry. I have logged in from my office system and camera is not available. No problem. The other patients, if we can open up our cameras, it will be great. Yeah, he's there. I can see him. Mr. Professor Moji Ram is there. You can go ahead, Reena. Yes, sir. Yes, sir. मेरी मदर ऑक्सीमिया लास्ट 3 मंथ से ले रही है. उनसे पहले उनका हीमोग्लोबिन 8.5 to 9.5 के अराउंड ही रहता था. ना इंक्रीज हो रहा था ना डिक्रीज हो रहा था, इसी बीच रेंज में रह रहा था. फिर देन वी हैव स्टार्टेड दिस ऑक्सीमिया टैबलेट, एंड ड्यूरिंग हर लास्ट टेस्ट वी हैव नोटिस्ड दैट हर हीमोग्लोबिन हैज बीन इंक्रीज अप टू 11.9, and she is feeling much better. Her appetite has also increased. She is feeling much more active now. Thank you very much. वो तो अभी डायलिसिस पे नहीं थी. Thank you for giving her experience. Professor Moji Ram ji is a very learned teacher, professor. I'll ask him, आपने कब से ऑक्सीमिया शुरू किया या ये टैबलेट शुरू की? मार्च 2020. How are you feeling? Is there a difference या ये पहले वाले पेशेंट ऐसे ही बोल रहे हैं? नहीं, it's better. Much better. In what way? And it is suiting me also. In what way it is better, you feel? So I can answer that, doctor. So just for the context of the audience, my dad is a dialysis patient since last 4 years, and we've had several cases, especially in last 2 years, where his hemoglobin dipped up to a level of 4 as well. And this was, despite taking injections and a lot of blood transfusion that we had to undergo, and it was really costing us a lot, and as well as his health. But then March this year, when Dr. Varma, you suggested us starting with this tablet oxemia, I think that has really done the job. We've not had any instance of his hemoglobin dipping now. And as far as his energy level is concerned, that is also, really better. His appetite has improved, and otherwise also overall,
he feels really better. We have not seen any such cases of where his HB has dipped down, or any such case where we had to go for blood transfusion, or any such case has not happened. So I think that is really suiting him, as you also mentioned about the advantages. Thank you very much. HP had gone up more than total, and then this medicine was stopped. Okay. Again, So in fact, it increased. Again, we have started taking. So thank you very much. Thank you very much. This was, thank you very much for being there. And thank you very much, Reena Thakur. Over to organizers. Thank you so much, doctors, and thank you to our patients. We now have our members from the Kidney Warrior Foundation who have been through issues of anemia. Can I request the forum to be opened by Sachin Rao, please? Thank you, Marianne. Thank you so much, doctors, for that excellent information that you have given us. My first question is to Dr. Sahay. You mentioned, doctor, that the symptoms of anemia, they are very much similar to the symptoms of CKD. So my question is in two ways. First of all, would CKD anemia be different from the anemia exhibited by the normal people? Yeah, so some of the symptoms of anemia would be common. Even normal people, you mean non-CKD people with anemia, Yes, will have the same symptoms, because the main cause of symptoms is decreased oxygen flow to the different parts of the body. And practically the symptoms remain the same. I mean, you'll have an increased heartbeat because heart is trying to pump blood more and more so that oxygen reaches all parts of the body. It's trying to compensate for the less hemoglobin, and that happens in persons with CKD as well as without CKD. So that symptom would be same: fatigue, depression, loss of appetite, loss of sleep. Many of these are symptoms which occur because of anemia and may occur in a non-CKD patient as well. And you being a CKD patient yourself, you would have realized that many of these symptoms can be attributed to CKD also, like not sleeping well and breathlessness, all those things. So some of the symptoms of anemia and CKD are pretty much similar. That's why investigations are important. So I hope that answers your question. Yes, thank you very much. That in fact brings me to another question which is related to your answer. So since you mentioned that the symptoms are common between the two, I just wanted to ask you that we often say that CKD is a silent disease. You can't really detect it. And only when things go downhill in stage 5, at that time we come to know that your kidneys have failed. So if somebody, let's say somebody is chronically anemic, his anemia is constantly low, would you suggest that this person be evaluated for CKD? Excellent question. And in fact, though this forum is for anemia, Sachin, but one thing I would like to go across to all patients, not even patients, the general population as well, CKD is a silent killer. Pata bhi nahi chalta hai. So generally in many other countries, they do universal screening for CKD. Matlab, क्रियाटिनिन टेस्ट करना, और स्क्रीनिंग के 2 ही टेस्ट हैं, क्रियाटिनिन जिससे हम जीएफआर निकालते हैं और यूरिन प्रोटीन, सिर्फ 2 ही टेस्ट हैं, 1000 टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं. सो कई कंट्रीज में एवरीबॉडी इज स्क्रीन, बट इन इंडिया वी आर अ पॉपुलेशन ऑफ 1.4 बिलियन इंडियंस. सबको स्क्रीन करना पॉसिबल नहीं है, बट दे आर हाई रिस्क ग्रुप्स व्हिच नीड टू बी स्क्रीन्ड. और हाई रिस्क ग्रुप्स भी आराम से याद रखना है: बीपी पेशेंट्स, शुगर पेशेंट्स, जिनको हार्ट डिजीज है वो पेशेंट्स, जिनको फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी प्रॉब्लम है वो पेशेंट्स, जिनको एक ही किडनी है वो पेशेंट्स, जो पेन किलर्स पे हैं वो पेशेंट्स, एल्डरली एज अबाउ 65 इयर्स वो पेशेंट्स, और जिनको थोड़ी डिजीजेस हैं, फॉर एग्जांपल HIV से सफर करते हैं वो पेशेंट्स, जिनको पास्ट में कोई किडनी फेलियर हो चुका है फिर ठीक हुए हैं. सो पेशेंट सोचते हैं ठीक हो गए फिर चेक करने का जरूरत नहीं है, बट रिपीटेडली चेक करना है. सो ये दीज आर सम इम्पोर्टेंट ग्रुप्स. और आप एक और ऐड कर सकते हैं ओबेसिटी, जो इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ किडनी प्रॉब्लम है. सो आप ये 10 याद रख लीजिए. हर डॉक्टर को याद रखना है, हर पेशेंट को याद रखना है, हर जनरल प्रैक्टिशनर को याद रखना है. ऐसे कोई भी पेशेंट्स आए तो कम से कम साल में एक बार क्रियाटिनिन का टेस्ट और यूरिन एल्ब्यूमिन कराने में कितने पैसे लगते हैं. सो we are focusing on dialysis, we are focusing on transplant. That is very good. जो पेशेंट्स को ऑलरेडी किडनी फेल हो चुके हैं उनके लिए डायलिसिस ट्रांसप्लांट इज लाइफ सेविंग. बट और लोग ये सिचुएशन में ना चले जाएं, उसके लिए स्क्रीनिंग, प्रिवेंशन इज द ओनली आंसर.
आपको मालूम है कि इंडिया में 2 लाख पेशेंट्स को एंड स्टेज किडनी डिजीज होता है, मतलब हर साल 2 लाख लोगों को डायलिसिस मशीन चाहिए और ट्रांसप्लांट चाहिए। ट्रांसप्लांट कितने होते हैं इंडिया में हर साल? 15,000, नॉट मोर देन दैट। अपन इतनी सारी मशीन्स लगा रहे हैं, पीएम डायलिसिस मशीन्स लगा रहे हैं, कितने पेशेंट्स को डायलिसिस कर सकेंगे एवरी ईयर? 50,000। सो ये 50,000 प्लस 10,000, 60,000 पेशेंट्स, 2 लाख को चाहिए और अपन कर रहे हैं सिर्फ 50-60 हजार को, बाकियों का क्या होगा? सो प्रिवेंशन इज इंपॉर्टेंट, और इसलिए आपका क्वेश्चन बहुत पर्टिनेंट है। सो आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड मेक दिस मैसेज felt, heard, seen across the entire country कि स्क्रीनिंग करना चाहिए, स्पेशली जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं उनमें तो पक्का करना चाहिए। थैंक यू सो मच। आई होप जो ऑडियंस सुन रही है वो प्लीज टेक दिस मैसेज सीरियसली, एंड अगर आपके पास और कोई भी है आपके अड़ोस पड़ोस में तो प्लीज पास ऑन दिस मैसेज टू देम टू प्लीज गेट स्क्रीन्ड फॉर CKD एटलीस्ट। थैंक यू डॉक्टर सहाय। आई थिंक दैट शुड बी इट। करमजीत जी, अगर आपके कोई नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके पास है तो। हाँ जी हाँ, सो थैंक यू सचिन। मैं पहला क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आपसे। वी आर टॉकिंग एनीमिया इन CKD. Does anemia affect GFR or it may increase creatinine level? ऐसा डायरेक्टली नहीं होता है कि एनीमिया से GFR पे असर हो जाए या क्रिएटिनिन लेवल डायरेक्टली बढ़ जाए, बट ऐसा है कि एनीमिया की वजह से खून कम मिलता, ऑक्सीजन कम मिलती है टिश्यूज को, सो ऑक्सीजन की रिपेयर फंक्शन वो सब कम हो जाता है। सो ओवरऑल एनीमिया कोई भी ऑर्गन को वीक बना देता है, बट डायरेक्टली एनीमिया से आपका क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा ऐसा स्टडीज में नहीं बताया गया है। रिवर्स इज ट्रू, जैसे जैसे क्रिएटिनिन बढ़ेगा वैसे वैसे एनीमिया भी बढ़ जाएगा। ओके, सो आई होप दैट मेक्स इट क्लियर। बट ये याद रखिए कि CKD के जो भी सिम्टम्स हैं, अगर एनीमिया उसमें ऐड हो गया सो CKD के पेशेंट्स की तबीयत और खराब हो जाती है। मैम, does HB drops after every dialysis? क्या अगर डायलिसिस के बाद HP ड्रॉप होता है तो क्या हमें एवरी डायलिसिस के बाद उन्हें एरिथ्रोपोइटिन का इंजेक्शन देना चाहिए, या जैसे रूटीन में है कि वंस इन ए वीक और 15 डेज जैसे पेशेंट ले रहे हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट बता रहे हैं, वैसा होना चाहिए? तो देखिए, हर डायलिसिस के बाद एक्चुअली HB ड्रॉप नहीं होना चाहिए। अगर डायलिसिस सही तरह से किया है तो डायलिसिस में पानी निकालते हैं, अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है, तो इनफैक्ट हीमोग्लोबिन कई बार डायलिसिस के बाद बढ़ा हुआ आता है। अगर आप इमीडिएटली डायलिसिस के बाद हीमोग्लोबिन चेक करोगे, अगर हीमोग्लोबिन बार बार गिर रहा है डायलिसिस के बाद तो फिर चेक करना चाहिए कि डायलिसिस में कुछ ब्लड लॉस हो रहा है क्या, डायलिसिस में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप नेफ्रोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए, तो वो चेक करेंगे कि क्यों ब्लड का लेवल गिर रहा है डायलिसिस में। तो पहला आंसर ये है कि ये फैक्ट नहीं है, ये गलत है कि हर डायलिसिस के बाद थोड़ा बहुत ब्लड गिर जाएगा, हीमोग्लोबिन ड्रॉप होगा, वैसा नहीं होना चाहिए इफ एवरीथिंग इज गोइंग ऑन फाइन। और एरिथ्रोपोइटिन का आप तब का तब इंजेक्शन लेके हीमोग्लोबिन बढ़ाओगे, इट डजंट मेक एनी सेंस। एरिथ्रोपोइटिन का डोज कैसे डिटरमिन किया जाता है? डिपेंडिंग ऑन योर हीमोग्लोबिन लेवल, और जनरली जैसा वर्मा सर भी बता रहे थे, जैसा 4,000 यूनिट्स 3 times a week रूटीन डोज रहती है, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी वेट, आपका कितना हीमोग्लोबिन है, उसके हिसाब से डोज वेरी करती है और हीमोग्लोबिन के लेवल पे डोज डिसाइड की जाती है। और ये है कि मतलब अगर उसके बावजूद भी अगर बार बार हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो रहा है, तो जैसे हम आपको समझा रहे हैं कि देयर आर सो मेनी रीजंस, कई बार पूरा चीज ठीक होने के बाद, आयरन लेवल ठीक होने के बाद, न्यूट्रिशन ठीक होने के बाद, आयरन इंजेक्शन देने के बाद, एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन देने के बाद भी एनीमिया ठीक नहीं हो रहा है, तो तब डॉक्टर वर्मा सर ने बताया कि नई मेडिसिन आ गई है, हम इसको ओरल ईपो बोलते हैं, ओरल एरिथ्रोपोइटिन बोलते हैं, हिफ PHI। अब हिफ PHI बोलना ही मुश्किल है, डॉक्टर को ही बोला मुश्किल है, पेशेंट तो बोल पाएगा नहीं, बट नाम तो अच्छा है। और जाइडस कंपनी, अपन वी आर सो प्राउड कि डेसिड्यूस्टैट नाम का मॉलिक्यूल मतलब अपने देश की कंपनी ने बनाया है, सो नाम अच्छा है। ऑक्सीमिया, ऑक्सीजन को बनाती है ऑक्सीमिया, एनीमिया का ऑक्सीमिया, तो वो याद रख लेना, शायद ज्यादा आसान रहेगा। तो वो करते हैं मतलब सब कुछ रूल आउट करके, ये नहीं कि दुकान में गए खा लिया, दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। किरण जी, जो आपका सवाल था, जस्ट जो आंसर आपको किया है डॉक्टर मनीषा ने, एक अच्छे डायलिसिस में कभी भी 5 ml से ज्यादा ब्लड नहीं जाना चाहिए। जी सर। आपको मालूम है कि हीमोग्लोबिन अगर 1 ग्राम बढ़ना है, अगर 250 ml ब्लड दोगे तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ेगा लगभग। तो यानी कि
जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, अगर एक डायलिसिस में 5 ml ब्लड जा रहा है तो 6 महीने में जो 50 डायलिसिस होंगे उसमें मुश्किल से 1 ग्राम जितना हीमोग्लोबिन गिरना चाहिए। तो हर डायलिसिस में कोई ब्लड नहीं लॉस होना चाहिए। हाँ, कई बार आप हेपरिन वगैरह नहीं देते एडिक्वेट, किसी का फिल्टर क्लॉट हो जाए तो उसके डायलाइजर में, ट्यूबिंग में फिर वो 60 से 100 ml तक ब्लड क्लॉट हो सकता है, वो वेस्ट जा सकता है। दैट इज एन एक्सेप्शन बट नॉट इन एनी डायलिसिस। डायलिसिस में ब्लड लॉस नहीं होना चाहिए। जी सर। सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ही पूछना चाहूंगी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। If a patient is planning for kidney transplant in near future, is blood transfusion is safe for him or her? कि क्या डॉक्टर सलाह देते हैं कि अगर HB बहुत कम है तो इज इट सेफ? और इसके साथ ही एक और टर्म है एंटीबॉडी। बहुत अच्छा सवाल है आपका करमजीत। क्या है कि कभी भी ट्रांसप्लांट से पहले आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं देना चाहिए। जी सर। ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने से उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन सकती हैं जो पेशेंट के HLA के साथ क्रॉस रिएक्ट कर सकती है। मान लीजिए आज मैं ब्लड देता हूं, अब इसकी एंटीबॉडीज लगभग 15 दिन बाद पता चलेगी मुझे। अगर मैंने आज पेशेंट का क्रॉस मैच करवा लिया कि आज मैं भी ट्रांसप्लांट करने के लिए जा रहा हूं या 15 दिन, महीने के बाद ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो इनको ब्लड नहीं देना चाहिए। अगर आपने ब्लड दिया है आज, मान लीजिए कई बार होता है कि हीमोग्लोबिन 4 ग्राम रह गया, 3 ग्राम रह गया, हम क्या करें, ब्लड देना पड़ गया। तो अगर आप ब्लड दे रहे हैं आज, तो साइंटिफिकली 15 दिन के बाद जब अगर इनका क्रॉस मैच या कुछ कराएंगे, वो नेगेटिव हो तो ठीक ठाक है। तो एज ए पॉलिसी you should avoid blood transfusion in a patient who is going for transplant in the last 15-20 days. यानी कि अगर मैं आज क्रॉस मैच कर रहा हूं तो उसके 15 दिन पहले तक मैंने ब्लड अगर दिया है, 20 दिन पहले, 25 दिन पहले, कोई बात नहीं। अगर 15 दिन के पहले ब्लड दिया है, अब इसके 15 दिन के बाद टेस्ट करा रहा हूं, देन एंटीबॉडीज नहीं आनी चाहिए। अगर आप ब्लड देते हैं तो उससे एंटीबॉडीज बनने का खतरा होता है। अगर कभी इमरजेंसी आपको हो जाए, कभी देना पड़ जाए, तो उसको कहते हैं ल्यूकोसाइट फ्री, यानी कि ल्यूको एड्सॉर्प्शन, ल्यूको फिल्टर लगाना पड़ता है। वो फिल्टर जब 1200-1300 जितने का भी आता है, वो फिल्टर लगा के अगर देना पड़ जाए, देन इट इज सेफर, बट ट्राई टू अवॉइड इट। जी सर, थैंक यू सर। अब मेरी दोस्त मेरियन है, वो कुछ पूछना चाहेंगे। मेरियन प्लीज। Hi. Yes. Hi. Merlin? Yeah. Yeah. I just have one question. Thanks, ma'am and sir, for the presentation. Ma'am, you mentioned in your presentation कि anemia की वजह से there is reduced cognitive function also, which we discussed many times in a support group. कि cognitively we are not able to perform certain things. What happens is after transplant also, some of us recipients don't take seriously anemia, even if it's at 10 or 9 or 10. We take the tablets, but it's not so serious. So my question is, ma'am, if we treat anemia, if we look at it seriously for a long time, can we get back, or can the cognitive function be improved or for a longer term? Okay, so remember कि ये cognitive function का impairment का एक कारण anemia है, but there are other reasons as well. So काफी कारण होते हैं cognitive function impairment के। Cognitive function impairment एज रिलेटेड रह सकता है, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस की वजह से रह सकता है, एनीमिया की वजह से रह सकता है, रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से रह सकता है, हाइपोनाट्रीमिया जिसमें सोडियम लो है उसकी। सो बहुत कारण होते हैं। अगर सिर्फ एनीमिया की वजह से है, सो एनीमिया करेक्ट करने के बाद काफी हद तक उसमें इंप्रूवमेंट आ जाता है। बट याद रखिए, मेडिसिन इतनी सिंपल नहीं है। 2+2 ऑलवेज डज नॉट मेक अ 4 इन मेडिसिन, और हर चीज के काफी कारण होते हैं। तो कोई भी डॉक्टर से पूछोगे, एक सिंपल आंसर की आशा रखोगे, तो वो डॉक्टर सिंपल आंसर कभी नहीं दे पाएगा, कॉम्प्लिकेटेड आंसर ही देगा। तो उसका बोलने का ये मतलब है कि प्रिंसिपल क्या है कि जो भी चीज ट्रीटेबल है वो अपन ट्रीट करना चाहिए।
तो कॉग्निटिव फंक्शन इंपेयरमेंट है और पेशेंट एनीमिक है तो एनीमिया करेक्ट करना चाहिए, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स ठीक करने चाहिए, उसके साथ साथ उसके शुगर लेवल्स चेक कर लेने चाहिए, उसके साथ साथ न्यूरो ओपिनियन लेके उसके बाकी नर्वस सिस्टम फंक्शंस भी चेक कर लेने चाहिए। तो ये अपने हाथ में है। सम थिंग्स इन मेडिसिन आर स्टिल इनएक्सप्रेसिबल, बोल नहीं सकते, कई बार नॉर्मल एजिंग प्रोसेस भी रहता है, वो चीजें रिवर्स नहीं होती है, बट वी शुड फोकस ऑन द थिंग्स वी कैन रिवर्स। उनके बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है जो अपने हाथ में नहीं है। अपन उनके बारे में वरी करके अपना लाइफ ही स्ट्रेसफुल बनाएंगे। अदरवाइज फोकस ऑन व्हाट वी कैन रिवर्स, एंड एनीमिया इज वन थिंग व्हिच इज इन आवर हैंड्स। दैट्स व्हाट आई बिलीव। थैंक यू। बिल्कुल ठीक, जैसे आप डॉक्टर साहब ने बताया आपको, जो एनीमिया की वजह से हुआ है वो ठीक होने के चांसेस है आपके। अब डायलिसिस पेशेंट्स को आपको हैरानी होगी, 75% से ऊपर लोगों के कॉग्निटिव डिसफंक्शन होता है, चाहे मॉडरेट टू सीवियर। सिर्फ 20-25% को कॉग्निटिव डिसफंक्शन नहीं होता। अब जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कई कारण है, एनीमिया एक है, अब हाइपोटेंशन बार बार डायलिसिस में हो रहा है वो अलग कारण है। तो इसीलिए जब वो ट्रांसप्लांट हो जाता है तो काफी कॉग्निटिव फंक्शन इंप्रूव हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप एनीमिया करेक्ट करोगे तो काफी कॉग्निटिव फंक्शन इंप्रूव हो जाते हैं। जो पोर्शन है ब्रेन का डेड हो गया वो तो हो गया, वो तो ठीक नहीं होता। भगवान ने ब्रेन और हार्ट ऐसे बनाए हैं जो दोबारा ठीक नहीं होते। एक बार जो पोर्शन मर गया मर गया, इसलिए जो पोर्शन छोटा मोटा मर गया तो मर गया, अदरवाइज जो रिकवरेबल है ठीक हो जाता है। तो सर जो बोले ना भगवान ने ऐसे बनाया जो मर गया सो मर गया, लेकिन ये भी याद रखो पॉजिटिव नोट में कि भगवान ने इतना बनाया कि रिजर्व कैपेसिटी है, बाकी जो बचा हुआ है उसको ध्यान रख लीजिए। दैट इज ऑल व्हाट वी हैव टू डू। थैंक यू। थैंक यू सर। I was thinking we'll take one question from the public that has come, and this is a patient who's been on dialysis since 2020 and also been on an autoimmune disease of amyloidosis with chemotherapy since the year 2014 to 2017. So I'm going to just read out the question that's coming on live. Patient on thalassemia minor. Dialysis started in April 2020. She takes Darbacue 40 injections twice a week. She has to take blood pack when the hemoglobin goes below 7. Sometimes hemoglobin drops due to the loss, blood loss, and sometimes blood oozes during dialysis. What would you recommend for this patient in such a case? Can oral medicines help? And देखिए ऐसा है कि what she has is thalassemia minor. अब थैलेसीमिया माइनर में इनका हीमोग्लोबिन पहली चीज तो 9-10 से ऊपर बढ़ेगा नहीं, बिकॉज दैट इज जेनेटिकली डिफरेंट थिंग, इससे ऊपर बढ़ेगा नहीं। दूसरा जो आपने डोज बताई इनकी, शी इज टेकिंग डार्बिक्योर 40 माइक्रोग्राम ट्वाइस ए वीक, इट इज हाई डोज, दैट इज नॉट रिकमेंडेड डोज, बिकॉज जैसे मैंने बताया था जितना ज्यादा आप एरिथ्रोपोएटिन लोगे उतना नुकसान करोगे, whether it is cardiovascular or whether it is other problems. तो do not overshoot, कि जितनी डोज आपको चाहिए उतनी ही डोज लीजिए। अगर कोई ब्लड लॉस हो रहा है because of clotting, tubing, that is a separate thing, that is a correctable thing, but she should target what her hemoglobin was prior to starting dialysis. If her hemoglobin was 8 or 9 gram, she should target कि मेरा 8 उतना हीमोग्लोबिन जाए। उतना हीमोग्लोबिन के लिए I personally feel whatever type of, if she wants to take twice a week, she should take short acting, because these are wrong things. Many people try to take 10,000 unit once a week, which is an incorrect dose. That is not a physiological dose. Physiological dose will be 3,000, 4,000 unit twice a week. Instead of what she is taking Darbicure 40 microgram twice a week, instead of that, she can shift to short-acting erythropoietin. There are so many of them. She can take 4,000 unit twice a week. That is a correct dose. And don't target that my hemoglobin should become 11, 12. Now, the question is whether the oral medicine is effective or not.
Now, mind you, oral medicine has not been tried in these extra settings. Whenever you do a drug trial, you always exclude patients of cancer, hemoglobinopathies, etc. So, but there is no reason that it should not be effective. So there is no problem. We are giving to one outpatient of thalassemia minor also. So there is no reason that it should not be effective. It will remain as effective as in other patients, but correct dose should be given. What do you say, Dr. Manisha? Agree, sir. You have beautifully covered the question. So, और आप बता रहे थे ये पेशेंट को amyloidosis भी है, ये same patient का ही बता रहे थे आप, माँ? हाँ, okay. So yeah, so as Dr. Varma already pointed out कि minor में hemoglobin कमी रहता है और डोज अपन एक्स्ट्रा डोज लेके कोई फायदा नहीं है, एक्स्ट्रा डोज लेके we land in complications. कोई भी अच्छी चीज अपन एक्सेस में खा लेंगे वो पॉइजन ही बन जाएगी. So I think करेक्ट डोज ही लेना चाहिए. And Dr. Varma already said कि targets, let a target around 10, maybe that should be okay, or find out what the cause of her anemia is rather than just increasing the dose of dabipoetin. And there is no reason that ये जो नया वाला medicine है उसको काम नहीं करेगा. But anyhow, जैसा मैं बताई, all medicines have their pluses and minuses. कुछ भी start करने के पहले consult your nephrologist because medicine is a vast science. अब over the counter जाके लेके खा लिया, obviously you are going to end up in problems. So it's better to consult and then go ahead. Yeah, Sachin, you raise your hand. You want to ask a question? Yeah, thanks, Marianne. On this very, since we are discussing the oral medication oxemia, I just had a question for Dr. Varma. Sir, is there any group of patients whom this drug is not suitable for? Very good, very good. Very intelligent questions you asked. I must compliment you. See, this medicine is increasing the hypoxic molecule in the body. So there are certain diseases where we are not sure it should be given or not. Like if a person has got diabetic proliferative retinopathy, if a person has got underlying cancer, if a person has got ADPKD, polycystic kidney disease, where the progression of the polycystic kidney disease can occur. So these are some of the factors that you should try to avoid at present. If a person is a diabetic, sometimes people, I don't mind giving it, but if he has got retinopathy, I am a bit skeptical, especially proliferative retinopathy, malignancy, as I said, ADPKD. If such conditions, I'll be reluctant to give at the moment. Okay, thank you so much. Just one, I think I wanted to highlight to everyone. I think one of the advantages that I noticed for the oral medication is there is no cold chain maintenance, I believe. Very good, yeah. Normal EPO we need to maintain. So you have hit a very important question, which Manisha and myself both are bothered, because in private setups, people afford, people can get, and the cold chain is maintained. But in government organization, what she is dealing are in patient, what we get, CGHS, ESI, such patients, you are never certain about cold chain. You don't know because these organizations, as per the rule, they will have to buy L1 or the cheapest tender. Now, the cheapest tender, whether they are keeping it in the cold chain or not, that is one of the important reasons. Many times the drug is ineffective because the cold chain is not maintained. That is another advantage, as you mentioned, about oral tablet. Sir, लेकिन ये cold chain जैसे आपने कहा वो problem तो even our normal, most of us dialysis patients, when we buy it from the retailer, we also have that problem ki whether he has maintained it or no. Is there any way to find out whether the there is no way you can check. Yeah, so actually मैं काफी दिन से एक चीज बोल रही थी, जैसे आपको मालूम होगा पोलियो वैक्सीन मिलती है इंडिया में, so पोलियो वैक्सीन को भी कोल्ड चेन की काफी जरूरत रहती है. So गवर्नमेंट ने क्या किया कि पोलियो वैक्सीन अगर खराब हो गई तो पिंक हो जाती है, so एंड यूजर को मालूम हो जाता है अगर ट्रांसपेरेंट है मतलब कोल्ड चेन मेंटेन्ड है, अगर पिंक हो गई मतलब बीच में गर्म हो गई थी and cold chain is broken. Same thing can be followed by erythropoietin, companies. It should be mandated ताकि end user को मालूम हो जाए कि cold chain कहीं break हुआ या नहीं हुआ. But again, that is not my decision. It has to be taken at a higher level, I guess.
and whether it will be done or not, God knows. So if something oral comes, that would be really, really great. So as for example, this medicine. Yeah, thank you. Marianne, any other questions from the live? Yeah, I just wanted to understand, out of curiosity, patients have already been using the drug. How much is the drug available in the market for? This drug, first of all, I must admit, we are not advertising for any company. It should be clear, neither Dr. Manisha nor myself, we are not advertising for company. This is a purely academic exercise for patients. That is what we are doing. It is incidentally because the drug has been used. Now, the drug is costing, they are making it at 50 milligram tablet. So each tablet is 100 rupees at the moment, MRP. So it becomes 200 rupees and the dose is 100 milligram 3 times a week. So that means each strip will have 6 tablets. Probably company will come out with 100 milligram tablet, then it will become 1 tablet 3 times a week. At the moment, it is 50 milligram tablet. So 2 tablets 3 times a week. You can take any time, that is immaterial. So 6 tablet will cost 600 rupees. And 4 in a month, it is 2,400 rupees. And possibly the company gives some discount also. So you are targeting 2,000 rupees cost per month for the patient, which works out fortunately cheaper than the available brands. Whichever brand you otherwise you take, you like you were mentioning Darby Cure or whatever. So all drugs are approximately 1,000 rupees a week if you take 4,000. So this medicine is costing you approximately 2,000 a month. Thank you, doctor. Actually, we have a lot more questions coming in, but one of the things we try to maintain is the time for which we blocked our doctors and the patient community. We're already 20 minutes beyond our schedule of time. So it's a kind request. We're going to have a lot more questions coming in because this particular video is going to be available both online and it becomes also a YouTube video. So we will have questions coming in from the community and we'll come back to Zydus, we'll come back to the respective doctors and ask them for any clarification that is needed. If our committee members cannot answer them, then we'll request the doctors to kind of address these questions. And how can it be available for the community members? We'll get back to you with more information on this if it's something that catches your attention. But in the meantime, on behalf of the Kidney Warrior Foundation, and of course, a special thanks to Zydus for joining us to create such an amazing awareness on a topic that is not so commonly spoken about, because we are so much dealing with the journey of CKD that we forget the symptoms that leave us more tired than the dialysis process itself. So thank you for joining us, doctors. Thank you, patients, for joining us and creating this awareness. Your case studies were amazing to kind of leave an experience back with the ones listening. This is me, Marianne, signing off, wishing you all a very good evening. Thank you. Thank you very much, Thank Kidney you. Warriors, for this good opportunity. Thank you.